दोस्तों, वी आर एनएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर। हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग का लाइव हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें। सीकन ट्रेडिंग, पासन करें ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। दोस्तों यहाँ देखो इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार स्ट्रैटेजी। The evening and morning star candlestick patterns occurs at the end of the upward downward trends respectively at the trend to indicate reversal pattern. Carefully watching this though, the names comes from the star shaped formation of the arrangement as you can see from the image below. Okay, the first candlestick in the direction of the trend followed by the bullish or bearish candle with a small body. The third candlestick is seen in the direction of reversal, ideally closing past the halfway point of the first candlestick trading. The candlestick pattern will require the confirmation candle in the direction of respective reversal. Okay, for example traders will look for the bearish candle after the evening star. Understood दोस्तों, वी आर एनएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर। हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान कर रहे हैं। हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़ हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें। सीकन ट्रेडिंग, पासन करें ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मेथड जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहाँ देखो नेक्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल रेशियो। एजिंग द हेल्थ ऑफ अ कंपनी इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट involve measure in a liquidity. Understood? The term liquidity refers to how easily compare the company asset into a cash to pay short term obligation. Understood? दोस्तों यहाँ देखो carefully ना, the working capital ratio can be used in helping you measure liquidity. Okay, it represents a company ability to pay its current liability with its current asset. Okay, working capital is the difference between the current asset and the current liabilities. Example, current asset minus current liabilities equal to the working capital. The working capital ratio like working capital compares current assets dividing by the current asset by the current liabilities. Understood? Let's say example of the Tata company. You understood how the Tata company has a current asset of $8 million and the current liabilities of $4 million. The working capital ratio is $2 million. That's an indication of the healthy short-term liquidity. But दोस्तों, what if you two similar companies each had a ratio of 2? Okay, the firm with more cash among its current assets would be able to pay debit more quickly than the other. देखो टाटा and the HDFC Life quarterly earnings is a very moderate thing दोस्तों। Understood? दोस्तों वी आर एनएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर। हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग के रणनीति प्रदान कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें। सीकन ट्रेडिंग, पासन ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। ओके, इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मेथड जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखो बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग। या बुलिश और रिवर्सिंग एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में इंडिकेटेड रिवर्सल पैटर्न्स। या बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न shows the bulls outweigh bears as the pattern below shows the green body bulls cover completely the first candlestick bears. Understood? देखो दोस्तों ये bearish engulfing candlestick pattern is a small green or bullish candlestick followed by a larger red bearish candle emerging a small green candle. Okay, देखो Infosys and Reliance Life quarterly live is a very moderate thing nowadays. Okay दोस्तों, वी आर एनएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर। हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लाइव हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट में बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त है। सीकन ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मेथड जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखो quick ratio. The quick ratio is also called the acid test. It is another measure of the liquidity. It represents a company ability to pay current liabilities with the asset that can be converted to a cash quickly. The calculation for the quick ratio is current assets inventory prepared expenses divided by the current liabilities. Okay, current assets minus inventory prepared expensive divided by the current liabilities. The formula inventory because it can take into the sell and convert into the liquid assets. Okay, example, if HDFC company has $8 million in current assets, $2 million in inventory and the prepaid expenses
and the $4 million is a current liability. Okay, so you can calculate the mean of the quick ratio. $8 million minus a $2 million divided by the $4 million. Okay, it indicates that the company has enough to money to pay its bill and continue operating. Understood? दोस्तों वी आर एनएसएम सर्टिफिकेट है. हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें. सीकन ट्रेडिंग, पास ऑन करेंट ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करेंट ट्रेडिंग. If you want advanced trading method, join us our Telegram channel, link in description. Okay, दोस्तों यहाँ देखो next doji pattern. The doji candlestick chart pattern is associated with the indication in the market of underlying assets. This could mean the potential reversal of the current trend or consolidation. This pattern can occur at the top of the uptrend, bottom of a downtrend, or middle of the trend. This candlestick itself has an extremely small body center between a long upper and the lower wick. See, ITC and the Tata Motors quarterly earnings are moderate, or also sometimes it will move to the higher low range. Okay, दोस्तों वी आर एनएसएम सर्टिफिकेट है. हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें. सीकन ट्रेडिंग, पास ऑन करें ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग. इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मतलब जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. ओके दोस्तों यहाँ देखो नेक्स्ट है earnings per share EPS. when buying a stock you participate in the future earnings or risk of a loss of the company. Earnings per share is a measure of the probability of a company. Understood? Investors use it to gain an understanding of the company value. The company analytics calculate the EPS by dividing net income by the weighted average number of common shares outstanding during the year. Example, a formula is a net income divided by the weighted average equal to earnings per share. Earnings per share will also be zero or negative. If company has zero earnings or negative earnings representing a loss. Okay, देखो ONGC and HDFC Tata quarterly earnings is a high range of target reached. Okay, nowadays दोस्तों वी आर एनएसएम सर्टिफिकेट ट्रेडर. हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें. सीकन ट्रेडिंग, पास ऑन करेंट ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग. ओके, इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मेथड्स जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. दोस्तों यहाँ देखो नेक्स्ट हैमर पैटर्न. द हैमर कैंडलस्टिक इज अ pattern views a bullish reversal, okay, usually occurring at the bottom of the downward trend. This candle formation includes a small body wherever the open, high, low or close are roughly the same. There is a long lower wick beneath the body which should be more than twice the length of the candle body. The body may be bullish or bearish. However, bullish is considered more favorable. Okay, देखो Tata and HDFC Life quarterly earnings something moderate in this nowadays. Okay, दोस्तों वी आर एनएसएम सर्टिफाइड ट्रेडर. हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करते हैं. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़ो हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें. सीकन ट्रेडिंग, पास ऑन करेंट ट्रेडिंग, जीएन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग. If you want advanced trading method, join us our Telegram channel, link in description. Okay, दोस्तों यहाँ देखो next price earning ratio, P ratio. Okay, so short form is a P ratio. This ratio is used to investors to determine the stock potential for growth. It reflects how much they would pay to the receive $1 of earning. It's often used to compare the potential value of the selection of stocks. Okay, to calculate the P ratio, divided a company current stock price by its earnings per share to calculate the P ratio. Okay, the formula is current stock price divided by the earnings per share equal to price earnings ratio. Example, a company P ratio would be the $4 million. Okay, it is close trading as the $46.51 a share, and the EPS for the past 12 months average is the $4.90 only. Okay, investor would spend the $9.49 for every generated dollar of annual earnings. Investors have been willing to pay more than 20 times the EPS for the certain stocks when they have reflected that the future growth is earnings would give them adequate returns of the investment. Understood?
carefully watching the दोस्तों, the PE ratio will no longer make sense if a company has zero or negative earnings. Okay, देखो Reliance and IDFC SBI quarterly earnings is a moderate moving nowadays. Okay, दोस्तों वी आर NSM सर्टिफाइड ट्रेडर, हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लाइव हमसे जुड़न हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें। सीकन ट्रेडिंग, पासन करें ट्रेडिंग, जीवन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। ओके, इफ यू वांट एडवांस ट्रेडिंग मेथड जॉइन अस अवर लिंक टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अंडरस्टूड दोस्तों, यहाँ देखो नेक्स्ट बुलिश एंड बियरिश हरामी। A bullish or bearish harami may indicate a reversal pattern. Okay, it represents the word harami means the pregnant in the Japanese, and the name has been given to the candlestick pattern. Understood? Because it resembles the pregnant woman. The second candle in the pattern must be contained within the body of the first candle. As seen in the images below, this holds true for both bullish and bearish harami. A downward proceeds a bullish harami and upward precedes that of a bearish harami. Understood? देखो ICICI Bank and Kotak, HDFC quarterly earnings is something moderate range nowadays. Understood? दोस्तों वी आर NSM सर्टिफाइड ट्रेडर, हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी रणनीति प्रदान करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लाइव हमसे जुड़े हर शेयर मार्केट के बारे में नवनीतम जानकारी प्राप्त करें। सीकन ट्रेडिंग, पासन करें ट्रेडिंग, जीवन ट्रेडिंग, प्यार करें ट्रेडिंग। If you want advanced trading method, join us our Telegram channel, link in description. Understood? दोस्तों यहाँ देखो next debit to equity ratio. What if your prospective investment target is the borrowing too much? This can increase the fixed charges, reduce the earnings available for the dividend. Okay. The debit to equity D ratio measures how much a company is funding its operation using borrowing money. It can indicate whether shareholders' equity can cover all the debits if necessary. Okay, investors often use it to compare the leverage used by the different companies in the same entity. देखो, this can help them to determine the which might lower risk investment. Understood? Divided total leverage by the total shareholders' equity to calculate the debt to equity ratio. Understood? The formula is total liability divided by total shareholders equity equal to debit to equity ratio, DE ratio. Okay, let's say example the company दोस्तों अदानी पोर्ट में has a $3.1 million worth of loan and the shareholders equity of $13.3 million. That works out of modest ratios 0.23, which is acceptable under the most circumstances. Okay, but like with all the ratios, the metric must can be analyzed the terms of industry norms and company specific requirement. Okay, देखो आदित्य कैपिटल में बजाज इंश्योरेंस क्वार्टरली earnings is moderate and sometimes it will move the high and is a low price. Okay, दोस्तों वी आर NSM सर्टिफाइड ट्रेडर, हम ग्रुप में उच्च स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग रणनीति प्रदान करता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दैनिक लाइव ट्रेडिंग के लिए हमसे जुड़न हर